યુએનસીએચઆરસી કચ્છ ટીમ દ્વારા સાધુ વાસવાણી ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલ ખાતે બાળકોમાં સીપીઆર તાલીમ અને આરોગ્ય કેર અવેરનેસ ટિપ્સ અંગે સેમિનારનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. સંયુક્ત નૈતિક માનવ અધિકાર સમિતિના અધ્યક્ષ શ્રી નિલેશભાઈ જોશીના માર્ગદર્શન હેઠળ અને ગુજરાત રાજ્યના ઉપપ્રમુખ શ્રી કિશોરસિંહ જાડેજા આગેવાની હેઠળ યુએનએચઆરસી કચ્છ જિલ્લાની ટીમ દ્વારા તારીખ 18 ડિસેમ્બરના રોજ સાધુ વાસવાણી ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલ ખાતે બાળકોમાં સીપીઆર તાલીમ અને આરોગ્ય કેર અવેરનેસ ટીપ અને મોબાઈલ એક દૂષણ અને તેની ખરાબ અસરો અંગે સેમિનારનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં 325 વિદ્યાર્થીઓએ ભાગ લીધો હતો. યુએનએચઆરસી અને સમિતિના સેવા કાર્યોનો પરિચય આપતી વખતે સ્મિત ઠક્કરજી દ્વારા એન્કરિંગ કરવામાં આવ્યું હતું. કાર્યક્રમની શરૂઆત ડોક્ટર કમલેશ થરવાણીજીએ વિદ્યાર્થીઓને સીપીઆરની તાલીમ આપી અને આ પદ્ધતિ કેવી રીતે જીવન બચાવે છે અને દરેક વ્યક્તિ માટે આ પદ્ધતિ શીખવી કેટલી મહત્વપૂર્ણ છે અને તે કેટલી સરળ છે તેઓને તેના વિશે સારી સમજ અને જ્ઞાન મળ્યું અને પ્રેક્ટિકલ આપવામાં આવ્યું હતું. ડોક્ટર જાનકીજીએ ચૌહાણે બાળકોએ કેવો હેલ્ધી ફૂડ ખાવો જોઈએ અને કેવા પ્રકારની જીવનશૈલી અપનાવવી જોઈએ, વ્યાયામ અને યોગ સ્વાસ્થ્ય માટે કેટલા મહત્વપૂર્ણ છે, વિદ્યાર્થીઓને આસપાસનું વાતાવરણ કેવું હોવું જોઈએ તે વિશે માહિતી આપી હતી અને સરળ રીતે સમજાવ્યું હતું. શ્રીમતી મીનાક્ષી દવેજી અને ટીમ દ્વારા તૈયાર કરેલ નાટક મોબાઈલ દ્વારા પ્રદૂષણ અને તેની પ્રતિકૂળ અસરો અને તેનાથી બાળકોના માનસિક અને સ્વાસ્થ્ય પર કેટલું નુકસાન થાય છે અને બાળકોને તેના વ્યસનમાંથી કેવી રીતે મુક્ત કરી શકાય તે અંગે માહિતી આપી સમાજને સારો સંદેશ આપતું નાટક દર્શાવવામાં આવ્યું હતું. કાર્યક્રમના અંતે સાધુ વાસવાણી ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલના આચાર્ય શ્રીમતી સુભાલક્ષ્મીજી મેમનું શાળામાં આ કાર્યક્રમનું સુંદર આયોજન કરવા બદલ સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું અને શાળાને યુએનએચઆરસી દ્વારા પ્રમાણપત્ર એનાયત કરવામાં આવ્યું હતું. અંતે આ ભવ્ય સફળતા રાષ્ટ્રગીત સાથે કાર્યક્રમ સમાપ્ત થયો હતો. जानकी मैम ने आपको भी बताया कि आप कैसे आपको फूड खाने हैं, कैसे आपका एटमॉस्फेयर होना चाहिए, तो उस बारे में भी आपको अच्छा सा उन्होंने प्रैक्टिकली बहुत सारे एंजॉय करते करते सब लर्न करवाया. वो भी आपको ध्यान में रखना चाहिए. आपके पेरेंट्स को भी बताना चाहिए कि हमको ऐसा ऐसा खाना चाहिए. उस मेथड में भी आपको अच्छा से बताया. और लास्ट में हमारे मीनाक्षी मैम ने जो टीम ने जो मोबाइल के बारे में जो उसके मिस यूज करने से कैसे कैसे ये होते हैं करके नुकसान, उसके बारे में बताया. तो वो भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि अभी अगर स्टार्टिंग के पीरियड में आप कुछ करोगे मेहनत, तो आगे जाके आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट हो जाएगा. और अभी से ही आप आराम करना पसंद करोगे या एंजॉय करना पसंद करोगे तो लास्ट में आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा. तो चॉइस आपको करनी है कि कैसे करके आपको लाइफ में अपना स्टाइल जो है वो चेंज करना है. अगर कुछ बैड हैबिट्स है तो इसको कैसे करके इम्प्रूव करना है, वो करके आप करेंगे तो आपका जो फ्यूचर है वो एकदम ब्राइट होगा. इसलिए मैं आपको अभी से बेस्ट ऑफ लक देना चाहता हूँ. और पूरे जो स्कूल के हैं अपने जो प्रिंसिपल मैम हैं उनको भी मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है इनके लिए. और आप इतना मतलब कर रहे हो, आपके जो स्टूडेंट है उसके बारे में इतना अच्छा से सोच रहे हो. और हम दूसरे जो स्कूल के जो प्रिंसिपल्स वगैरह स्टाफ है उनको इन्वाइट किया है वो इसके लिए कि ये प्रोग्राम देंगे, वो भी आगे जाके ऐसे प्लानिंग कर सकते हैं कि मैंने जैसे किया है अपने स्टूडेंट के लिए कैसा अच्छा करवाना चाहते हैं बच्चों से. तो बाकी के जो स्कूल के जो प्रिंसिपल आए उनको भी हम यही बताना चाहते हैं कि आप भी ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स करवाइए. बच्चों के अंदर जो बैड हैबिट्स है उसको धीरे धीरे करके कैसे रिमूव कर सकते हैं. जैसे ज़्यादातर तो बच्चे भगवान का रूप होते हैं, अच्छा ही होता है, लेकिन जो अभी से हम उनके माइंड में डालेंगे तो वो आगे जाके वही रहेगा करके. और अभी से अगर कुछ है ऐसी चीज़ें वो निकालना चाहेंगे तो वो निकल जाएंगे. तो हम वही प्लानिंग करेंगे. लेकिन बाकी तो सब अच्छे से सबने समझा दिया है, तो आपको ज़्यादा का टाइम नहीं लेते हुए इतना ही बताऊंगा. और थैंक यू मैम, आपने इतना ये इंटरेस्ट लेके हमारी टीम को इधर इन्वाइट किया और अच्छे से ये हो गया प्रोग्राम. और काफ़ी सारी हमारे कच्छ की जो टीम है उन्होंने भी बहुत शॉर्ट पीरियड में ये पूरा अरेंजमेंट किया है. तो मैं मेरी टीम को भी पूरा थैंक यू बोलना चाहता हूँ. और ऐसे करके ये जो प्रोग्राम है हम पूरे कच्छ में, कच्छ से और गुजरात में और गुजरात से और इंडिया में ये जो है हमारी जो नैतिक मानव अधिकार समिति वो पूरे इंडिया में ये
मुस्कान आपकी हमारे लिए वरदान है। मुस्कान आपकी हमारे लिए वरदान है। आपका मार्गदर्शन हमारे लिए सम्मान है। आपका मार्गदर्शन हमारे लिए सम्मान है। आप आए खुदा हम पर मेहरबान है। आप आए खुदा हमारे पे मेहरबान है। बड़े नसीब वाले हैं जो आप हमारे मेहमान हैं। बड़े नसीब वाले हैं जो आप हमारे मेहमान हैं। गुड मॉर्निंग, आदाब एंड जय श्री कृष्ण गांधीधाम। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त एंकर स्मिथ ठक्कर। Ladies and gentlemen, esteemed guests, principals and the wonderful students of Sadhu Vaswani International School, I stand before you to announce a significant initiative brought to you by the United Noble Human Rights Committee. We are honored that we are registered with Niti Aayog and the United Nations in our pursuit of serving society with a special focus on well-being of women. Our committee, led by visionary chairman Nilesh Joshi sir and the diligent vice president Kishore Singh Jadeja, comprises a diverse team across India. We are proud to have 70% women and 30% men's ratio, including professionals such as doctors, teachers, lawyers, students, media teams, artists, social workers, and many more. Our guiding principle is and motto is सेवा ही हमारा लक्ष्य है, service is our goal. Today I am delighted to introduce three remarkable doctors who will lead a CPR training and Fit Life Mantra program for our students. जब सेहत हो साथ, जब सेहत हो साथ तभी है जीवन का रंग। जब सेहत हो साथ तभी है जीवन का रंग। आज हम लाए हैं एक नई कहानी। आज हम लाए हैं एक नई कहानी, एक नई संग। डॉक्टर कमलेश थारवानी सर्जरी के हैं शहंशाह। डॉक्टर कमलेश थारवानी सर्जरी के हैं शहंशाह। एमएस लैप्रोस्कोपिक बैरेटिक उनका है राज। एमएस लैप्रोस्कोपिक बैरेटिक उनका है राज। डॉक्टर काजल थारवानी चमकाते हैं उनके ज्ञान से। डॉक्टर काजल थारवानी चमकाते हैं उनके ज्ञान से। स्किन और वनरेबल डिजीज में है वो एक्सपर्ट कहलाते। डॉक्टर जानकी चौहान आरोग्य के सितारे। वेलनेस में है वो हमारे सबसे प्यारे। ये तीनों the sharp pain in the chest. Sometimes they might not even be the chest pain also. Sometimes you can see the patient will be complaining, okay, I have the upper back pain, or I am having the pain in the jaw. And sometimes it can be just a simple vomiting or nausea. So it is very difficult to identify in the women whether they are having a cardiac arrest or not. But sure shine, that is the fatigue. The patient fatigue is there, so you can see that okay, the patient might be having from syncopal attack and going into cardiac arrest. So what is our role? What is our role as a CPR provider or as a common man? What we can do for the patient? We can keep the brain alive until the normal rhythm is restored. So we have to do the CPR so that we can keep the brain alive, and we can just buy some time so that the patient reaches the hospital. So this is our primary goal as a common man, to make the patient, save the patient's life and make him reach the hospital at least. So CPR is very effective, and but it is the only method, and it can be given for a short time only. For that, after that, definitive methods like admission into hospital and admission into ICU has to be taken place, and it should be started as soon as possible. As soon as you identify the signs, danger signs, you should start with the CPR. You should not delay it, and you have to make sure that the heart is pumping. So this is what you required. And when the patient reaches the hospital, what we can do is we can put a tube inside the patient's mouth, and we can give additional shocks if they are required. So what you can do according to the ATLS provider protocol or a PLS protocol, you can call for a health, and you can start the airway breathing and circulation. As we discussed ABC, now how do? We already checked for the airway. We saw the patient is breathing or not. Now how should you start with the CPR? So position yourself to the patient side, and then the patient should be lying chin up or the face up, hyperextended, which I already showed, and the firm surface should be used. Make sure that the patient is lying. Hello? Yeah, when the patient is lying, it should be firm, it should be hard enough.
so that when you're providing the CPR, the patient's entire body doesn't go into the soft motion. So you need a hard surface or a firm surface so that your CPR is very effective. And you have to see whether there's a patient is having any neck injury, suspected head injury, and the cautions must be taken. For example, a bony injury, you might even sometimes worsen the patient's condition. So you have to be make sure that the patient is transported on a hard surface so that the further injuries can be protected. That is your goal. First is to secure the airways, breathing and circulation, and the second is that you have to protect the injuries and you don't have to do any additional injuries to the patient, because patient is already having some injury and you're giving more injuries. Now how to give the CPR? Next slide please. Put one palm of your hand on the center of the patient's chest, and the second one, any hand you can put on the left side of the chest. Then you have to start the CPR compressions at the rate of 15:2 according to the ATLS protocol, where you have to give 15 compressions and 2 breathings, and you have to check after every compressions whether the patient is